Good morning, children. So, once again, we are meeting in new lecture. Is it clear? That is lecture number 5 of supplementary reading. That is chapter number 7. What is the title of the chapter? The Last Leaf. Right? The Last Leaf. Written by O. Henry. Right? Now see, in last chapter, in last lecture rather, I have discussed number of things regarding this writer. Once again, let me remind, I cannot keep myself away from these things because, let me say one thing, O. Henry is my favorite writer. I have gone through number of stories of O. Henry. You have gone through one chapter that is called Duty and Friendship. I told you, right, last year. Other than that, O. Henry was very famous for writing short stories. And you will find twist at the end of the story. Each and every story is twisted. Understood? Talking personally, since this long time of teaching, I've come across 2 writers which impressed really. Right? I have read 2 writers. I have taught my children 2 writers from whom I was impressed. One was O. Henry and second was Russian writer Anton Chekhov. Right? He is also a very good writer. O. Henry has a specific system of writing in a twisting manner. His stories go straight. But suddenly, at the end of the title, the story makes U-turn. Same way, Anton Chekhov is such a person who always writes on reality of human nature. Right? He's writing on human beings, and specifically is targeting internal parts of the families. Understood? He is targeting husband, wife. He is targeting father, mother. He is targeting brothers, sisters, brothers. Right? Sisters. Number of stories. Right? But a very beautiful writing. Very beautiful writing. So ultimately, let us come to the title. Before this, children, let me deliver one advice to you, children. See, the situation of our city is getting worse and worse day by day. Right? You must be seeing, you must be reading newspapers at home. Take care that you don't unnecessarily go out. You are alone, you are all good children. ऐसे तो आप सब लोग शातिर हो, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो, क्या बोलूँ मेरे को मालूम नहीं, हाँ? लेकिन बच्चे लोग ये ध्यान रखना कि हमारी थोड़ी सी भी गलती, आपकी, मेरी, कुछ किसी की भी थोड़ी सी भी गलती पूरे परिवार को सजा दे सकती है. प्लीज चिल्ड्रन, प्लीज डोंट गो आउट अननेसेसरीली. Focus in your studies. It is not a vacation. Right? It is not a vacation. It is a situation of helplessness. बाकी पूरी बाजार खुली है, व्यापार धंधा खुला है, सिर्फ स्कूली चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे को नुकसान ना हो इसीलिए ये सब करना पड़ता है. So don't take it in an enjoyable manner. It's not a vacation part, because when I am calling children as a part of monitor, sometimes I get complaints from the parents. Sir, ये है, sir वो है, ये पढ़ता नहीं है, ये ध्यान नहीं रखता. And by this medium of video lecture, I am instructing you children. Please obey your parents. Please don't act haphazardly. अपनी मनमानी मत करो. Understood? Please obey your parents. Because just now I told you before few seconds, once again I am repeating,
It is not a vacation. Next year you are supposed to transfer to 10th standard. If your fundamentals or basic is poor, then how can you cope up in 10th standard? How can you go in further career? On the contrary, you must think you got a beautiful time to work hard. अभी स्कूल नहीं है आपके पास, पूरा शेड्यूल है आपके पास, एक्स्ट्रा काम भी आपके पास है, और अभी ऐसे माहौल में बाहर जाना भी ठीक नहीं है. कई बच्चे लोग अपने माँ बाप की सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कई ऐसी शिकायतें आई है पेरेंट्स की तरफ से. So by the medium of this video lecture, I am instructing you children. Please don't go out unnecessary. Don't invite trouble. Please be careful, children. Don't invite unnecessary troubles. Understood? किसी काम का, गलत काम का निमित्त आप मत बनो. It is my heartily request to you. Okay, children, I hope you'll follow us. You'll respect our words. Right? From my whole staff, this is my heartily request to all of you. Okay? So, coming back to the title, O. Henry, the last slave. Acha, the main characters were Shu, Chauncey, and Behram. I'm not writing over it because I'm supposed to write meaning. Shu, Chauncey, and Behram. In first lecture, I told you about the proceeding of the lesson. These two girls, Shu and Chauncey, were struggling artists, and they lived in a small apartment. Right? They lived in a small apartment. Now, here, what happened? One day, Chauncey fell ill. She was advised to take rest. And as a part of resting, her apartment was not that high-rise building. It was a normal one, below normal. Because it was not an expensive one. They were just upcoming artists. Right? So they were living in that type of area rather, in that apartment. As a part of rest, she was lying in her bed. Where she was lying, there was a huge open window facing outward. As a part of rest, you see, you are just supposed to think wild thoughts, sleep, or look out of the window. और अब जब बीमार होते हैं तो नींद भी कम आती है. वैसे नींद आती है, बीमारी के वक्त नींद नहीं आती. सही बात है. So, all this thing happened. Now, one day, this girl fell ill. This is what we call Shu. She was ill. She was resting over there. Treatment was started. But treatment was not responding. Understood? Treatment was not responding. Her colleague was worried. Chauncey was worried. Sorry, Chauncey was ill, Shu was worried. Okay, what is going on? Why this girl is not getting well? Right? She insisted to doctor. Why medicine is not working? So, doctor told her rather, okay, is this girl suffering from any mental, you can say depression or like any other thing? That opposite girl said, no, it is not like that. We don't have any such issues rather. We are just enjoying our work. Doctor confirmedly said, there is some matter. Possibly she is suffering from other type of depression rather. That means she is in a mental depressed state. Okay, let us see. One day, when these both girls were sitting, this little one, this ill person, this ill girl, asked that girl, can you see this creeper there? Because exactly where she was laying, on the opposite side of the wall,
there was a ivy creeper climbing up almost to the third floor. 2 days before, it has already 100 leaves. It was autumn time, November, December time. Specifically, autumn season is a leaf shedding season. Almost each and every trees get bare over there. I have seen, before 2 days, this creeper was holding more than 100 leaves. But now, it has reduced to almost single digit. She started to count. 12 and 11, all these things I told you, na? And this is the thing she explained. When the last leaf from this ivy creeper will fall, I will die. That means she connected her death with a leaf, falling of a leaf. Because this creeper was holding more than 100 leaves before 2 or 3 days. And today it has already turned bare. And that is why I cannot avoid thinking of my death. Now, Jhansi was in strong enigma, right, in this sense. The opposite girl did not say anything. But she made up her mind how to cure this. And that is my second part. Okay? Okay. Page number 41. Page number 41, first arrow. Jhansi did not say anything. She went on and brought her a bowl of soup. Right? When she was instructed, it is a autumn time, usually leaves trading time. So living and giving of trees leaves, it is not connected to each other. Life is not connected to falling off leaves. फिर भी अपने दिमाग में ऐसी बात उसने बना ली थी. और जब दिमाग काम पे लग जाता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स पे लग जाता है, तब किसी का बस नहीं चलता. क्या करें? जितना आप अवॉइड करो उतना ज्यादा थिंग्स दिमाग में घुमराने लगता है. राइट? आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉनसी. क्योंकि वो बीमार थी, जल्दी ठीक तो होना था. खिलाने की बात हुई, soup diya. She ignored. I don't want to drink. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. 12 leaves थी जब ये बात शुरू हुई थी. तब 12 में से एक गिरते गिरते 4 तक पहुंच गई. बराबर? 4 लीव्स तक पहुंच गई बात. अभी 4 लीव्स गिर जाएंगे. एक पवन का झोंका आएगा, 4 लीव्स गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगी. ये मेरा अंतिम दिन है. इसने अपने दिमाग में ऐसा सोच लिया. हाँ? I don't want any soup, said Jhansi. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Dark means evening, right? Before it gets evening time, I want to see the last leaf falling. Dark. Evening or night time. Evening time or night time, right? Before it gets dark. And then I will sleep forever. I will sleep forever means I will die. Sleep. Die. Right? I will sleep forever means I will die. I will leave this world. She sat down on Jhansi's bed, kissed her and said, my dear, you are not going to die. What bluffing you are making about? कैसे पागलों जैसी बातें कर रही है तू? Nothing will happen to you. You are not going to die. Mr. I can't draw the curtain for a need of the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she said, she begged Jhansi, promise me not to look out of the window while I paint. कैसे बेकी बेकी तो बातें कर रही है? बराबर है?
कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है, तुझे तुझे कुछ नहीं होने वाला है, और देख पैसे भी खत्म हो गए हैं, चीजें लानी है, दवाई लानी है, मेरा एक पेंटिंग बाकी है, तो मैं अपना काम करती हूँ कर्टन क्लोज करके, तू आराम से रेस्ट कर और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि अगर ये मैंने पेंटिंग खत्म की तो ये सब ऑपोजिट पार्टी को देने वाले, उसमें से हमको पैसे मिलेंगे ताकि हमारा कुछ खर्च निकल सके। उसने जॉन्सी को कन्विंस कर लिया ऐसे, राइट, कि भाई मेरे को एक पेंटिंग करनी है, कंप्लीट है, काम बाकी है, तेरे को मालूम है, आज पहुंचानी है, डिलीवर करनी है, पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एंड यू टेक अ रेस्ट। All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. उसने बारी का कर्टन बंद कर दिया। सही बात है। जॉन्सी ने लेटे लेटे बोला कि कोई बात नहीं, अपना पेंटिंग जल्दी खत्म कर ले, मेरे को लास्ट पत्ता जब तक नहीं गिरता, मेरे को देखना है कैसे गिरता है, मतलब मेरे को मेरी मौत दिखनी है। और आप सोचो, कोई भी इंसान अपनी मौत थोड़ा दिख सकता है, लेकिन उसको देखनी थी, because she has connected her life with falling of that leaves. She has strongly made up her mind that when the last leaf will fall, I will die. Okay? So, what happened? I am tired of waiting. Why death is not coming? Why the leaf is not falling fast? Right? I am tired of waiting. I have to die. So, let me go away peacefully like one of those poor, tired leaves. I want a tranquil death. Right? I want a peaceful death. And these leaves are literally harassing me. They are not falling fast. If they will fall fast, फटाफट हो जाएगा, तो मेरी मृत्यु भी फटाफट आ जाएगी, जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दो चार पत्ते जो बचे हैं वो जल्दी से गिरते भी नहीं है, वैसे खामखा मेरे को तड़पाते ऐसे। ट्राई टू स्लीप, सेड शू, क्योंकि जब बुखार दिमाग में चढ़ जाता है तो पेशेंट ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, आपको मालूम है, राइट? तो ये उसका बकवास था। ट्राई टू स्लीप, said Shu. I have to paint an old miner. Means name of a painting. I will call Behram up to my model. Understood? एक पेंटिंग करनी थी, और बेहराम जो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था, उन लोग को ये लड़कियां जानती थी, लाइव पेंटिंग करनी थी। तो उसने बताया कि मैं बेहराम को बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक मॉडल चाहिए सामने बैठने के लिए, तो इसीलिए तू सो जा, मैं अपना काम निपटाती हूँ, राइट? शू रश्ड डाउन। बेहराम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वही अपार्टमेंट में बिल्कुल नीचे रहता था बेहराम। अंडरस्टूड? अभी थोड़ा बेहराम का बैकग्राउंड देने वाले हैं। He was 60 years old painter, right? What was the age of Behram? 60 years. His lifelong dream was to paint a masterpiece. But that had remained a dream since such a long career. Right? He was unable to deliver a masterpiece. In first lecture I told you, no? When does painter become immortal? At what time? When he creates a masterpiece. When he creates a painting in such a way that his painting becomes a masterpiece in world, painting will remain forever. And with that painting, his name will remain forever. Understood? बाकी तो ऐसे दुनिया में हजारों पेंटर्स होते हैं, सब फर्स्ट रैंक पेंटर नहीं बन सकते। तो बेहराम की ये इच्छा थी कि वो एक ऐसा पेंटिंग बनाए अपने जीवन काल में ताकि वो अमर हो जाए। पेंटिंग की वजह से उसका नाम मास्टरपीस में आ जाए, मतलब अमर बन जाए। 60 साल का हो गया था, मतलब he was painting since last 30 to 40 years possibly, but still
he was not able to deliver such a masterpiece, and he was in search of one. वो भी सोचता था कि भाई चलो और फिर तो बुढ़ापा आ गया, मैंने अब आज तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनाई जो लोग याद रखें, राइट? और कब अपॉर्चुनिटी समय हमको दे देता है हमको मालूम भी नहीं पड़ता, आगे देखो क्या होता है. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries. Poured means told her worries. बहराम को मिली, बहराम को पूरी बात शॉर्ट में बताई कि जॉन्सी बीमार है, उसने पागलपन शुरू कर दिया है, ऐसा है ऐसा है, and she has connected her life to the falling of a leaf. She is adamantly saying, strongly saying, that when the last leaf will fall, I will die. Now, how to remove this misconception? ऐसी जड़ विचार उसके दिमाग में से मैं कैसे निकालूं? आप मेरे को मदद करो प्लीज. उसके दिमाग में एक आइडिया था, कैसे? आगे देखते हैं. She poured out her worries to Behram. She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf will fall. बराबर? मेरी मृत्यु आज निश्चित है, आज मरने वाली हूं मैं. She is stupid, asked Behram. What does this falling of leaf has to do with this connection of life? I have not gone to say such a sarcastic remark. Huh? I have not listened this type of unusual things, right? Is she stupid? Asked Behram. How can be so foolish? She is absolutely foolish. She cannot be such a foolish girl. She is running on high temperature. That means she is suffering from fever. Complained Shu. She refuses to eat or drink, and that worries me the most. Because mentally she has surrendered. Mentally she has prepared herself for death. अपने स्वीकार कर लिया है कि आज अभी मैं मरने वाले हूं, और इसकी वजह से उसने छोड़ दिया. और आप इस बच्चों, अगर बीमारी के वक्त हम कुछ खाना पीना नहीं लेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? ज्यादा बीमारी बढ़ेगी ना. इसीलिए Ram, please help me out. So what happened? She is running high temperature, complained Shu. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. I will come to you and see Jhansi. Behram said, let me help you out. अगर मैं कुछ कर सकता हूं, सही बात है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो देखता हूं कि उसको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई बात बन जाए. I will come with you and see Jhansi, said Behram. They tiptoed into the room. Tiptoed. Tiptoed means silently. Silently. They tiptoed into the room. That means they silently entered the room. Jhansi was sleeping. Shrew pulled the curtains. Draw means pull. D-R-E-W. Right? Drew the curtains together. बारी का पर्दा ढांक दिया उसने. And then went into the next room. जहाँ जॉन्सी लेटी थी, उसकी बारी का पर्दा आस्ते से बिना किसी आवाज किए उसने बंद कर दिया ताकि वो जाग न जाए और बारी के बाद देखे नहीं. She peeped out through the window. From her room, she looked out. There was only one leaf on the creeper. पहले 12 लीफ थे और वो गिरते 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 आज एक लीफ तक पहुंच गया. अभी एक ही लीफ बचा है. शू भी टेंशन में आ गई कि जॉन्सी बार बार बोल रही है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा मर जाओगी, अभी एक ही बच्चा है, अभी वो कब की जाए मालूम नहीं, तब मेरा क्या होगा, उसको संभाले मुश्किल हो जाएगी. She made up her mind. She got idea in her mind. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily
and icy cold wind was blowing. बहुत ठंड हवा चल रही थी, right? और बारिश भी जम के हो रही थी. It seemed as though the leaf would fall any time now, because it was almost autumn season. The roots, right? The ending part of leaves have already weakened in this season. So little gust of wind is sufficient to bring down that leaf. And now it was icy cold, heavy rain, all together. So leaf can fall at any time. What to do? Behram did not say a word. He went back to his room. Right? behram ने देखा ये सब. शू ने उसको बताया कि देखो चाचा, एक ही पत्ता बचा है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी पत्ता है. ये गिर गया, वो मर जाएगी. ऐसे ऐसे वो मानती थी. behram समझ गया. कुछ बोले बिना उस जॉन्सी के रूम में गया. जॉन्सी woke up next morning. राइट? रात हो गई थी. ये सब रात के वक्त हुआ था. सुबह हुई, उजाला हुआ. In a feeble voice, right? F-E-E-B-L-E. Feeble. F-E-E-B-L-E. Feeble means weak. In a feeble voice, right? She asked Shoo to draw the curtain. बहुत वीक आवाज में, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाना पीना नहीं हुआ था. खाना भी छोड़ दिया था कल से. तो उसे बोला कि भाई तू थोड़ा पर्दा तो हटा, मेरे को देखना है. राइट? आई वांट टू चेक द प्रोग्रेस. लीफ है कि नहीं है. Shoo was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. Reluctantly means uneasily. Unwillingly. Unwillingly. Right? She drew back the curtains very reluctantly. Oh! Shoo exclaimed, looking at the vine creeper. When she drew that curtain. Right? Unwillingly. When the curtain was at the end of the window, she exclaimed, oh, look, there is still one leaf on the creeper. See, don't see. There is one leaf. Right? It is quite green and healthy. In spite of the storm and fierce wind last night, it did not fall. It's a miracle. चमत्कार हो गया. क्योंकि कल रात तो कितनी बारिश भी हुई थी, इतनी तेज हवा भी चल रही थी, लेकिन ये पत्ता नहीं गिरा था. उसकी स्टेम, उसकी जड़ें अभी भी ग्रीन थी, मतलब हेल्थी थी, लाइव थी. तो ये शायद सबको फेस करके बच गया है. I heard the wind last night, said Chauncey. I thought it would have fallen, and I will surely fall today. Then I will die. मेरे को भी मालूम है, मैं भी पूरी रात जागती रहती थी. रात बहुत हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी. तो मैंने तो मान ही लिया था कि ये पत्ता, सब पत्ते गिर गए होंगे और कल मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Shoo energetically. Energetically means confidently. I'm not having a space here, but I'm dictating. Okay? Because when I write down, it will go out of the screen. Okay? So you write down. Energetically, confidently. Right? With full of confidence. You have to live for your friend. What would happen to me if you die?
ये तूने सोचा? 2 दिन से तू लगा रखी है, मैं मरने वाली हूं, मैं मरने वाली हूं। अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा? यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड। अंडरस्टूड? यू आर नॉट गोइंग टू डाई। कुछ नहीं होने वाला है तेरे को, है समझ में? Chauncey smiled weakly and closed her eyes. After an hour or so, she could look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to a keeper. Clinging means sticking, right? Clinging. Clinging means sticking. Clinging means sticking. That means it seemed that leaf was almost stuck to that creeper. वो creeper से अलग ही नहीं होना चाहता था. Understood? That leaf was clinging to a creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Once again, it started to rain. Once again, wind started to blow. Now, Chauncey was confirmed, in this storm, I will not be saved. कल तो चलो बच गए थे, लेकिन ये पत्ता आज तो जरूर गिर जाएगा. कल रात बच गया था, आज सुबह बच गया था. कितना सह सकते हैं? नेचर के सामने वो हार जाएगा और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वापस बारिश शुरू हो गई थी. राइट? In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Chauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out for Shoo. काफी देर तक वो अपने बिस्तर में लेटी रही, बारिश को देखती रही, बैकग्राउंड में पत्ते को देखती रही. पत्ता बिल्कुल वैसे ही चिटका हुआ था, हिलता भी नहीं था, देखती ही रही. राइट? उसने शू को बुलाया कि तू इधर आ तो देख तो क्या हो रहा है. I have been a bad girl, unlucky girl. Bad means unlucky. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. Gloomy means thinking senselessly, clueless. Right? देखो, I have been depressed and gloomy. उसने शू की माफी मांगी. Right? The last leaf has shown me how wicked I have been. Wicked means cruel, unkind. I have realized that it is the sin to want to die. उसने शू को बुलाया, उसके दिमाग की घंटी बज गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था. शू की माफी मांगी कि मैं भी कैसे ऐसे बेकी बातें करने लगी थी. ऐसे मरना गुनाह है, मांगने से थोड़ी मौत मिल जाती है. तो कई लोग ऐसे हैरान होते हैं, परेशान होते हैं. हम देखते हैं अपने आसपास कितनी तकलीफ लोग झेलते हैं. बार बार लोग बोलते हैं इससे तो अच्छा बेहतर है मर जाना अच्छा है. ऐसा है ऐसा है, लेकिन ऐसे मौत थोड़ी मिलती है. इट इज नॉट इन अवर हैंड. यू सी चिल्ड्रन, लाइफ एंड डेथ इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड. वो ईश्वर नक्की करते हैं. अंडरस्टूड? स्ट्रगल इज अवर पार्ट. वी हैव टू फाइट, वी हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल्स. अंडरस्टूड? तो उसने अपने किए पर माफी मांग ली. Once again I am repeating that paragraph, very beautiful paragraph. I have been a bad girl to you. I have looked after you. You looked after me so lovingly, but I have not cooperated with you. Right? तू मेरा कितना ख्याल रखती थी और मैं तेरे को समझ नहीं पाई. Right? I have been depressed and gloomy. That means I have been a senseless girl, mindless girl. अनाप शनाप विचार करने लगी थी. Right? The last leaf has shown me how wicked I have been. भगवान को भी मंजूर नहीं था मेरे गुनाह, इसीलिए भगवान ये लास्ट पत्ता गिराता नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है ये पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी.
अभी तो ये पत्ता दो दो स्ट्रॉन्ग फेस करके, लेकिन अभी नहीं गिरा। उसका मतलब क्या है, उसका संदेशा कि अभी तेरे को कई कीमत चुकानी है, अभी तेरे को लंबा जिंदा रहना है, कई कार्य करने हैं। यू आर नॉट वेलकम हियर मीन्स इन किंगडम ऑफ डेथ। अभी तो अपना काम कर, आने की उम्र नहीं है तेरी, राइट? आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज सिन टू वांट टू डाई, राइट? शिव हग्ड जॉन्सी। जॉन्सी ये सब कुछ लेटे लेटे बोलती गई, शिव सुनती गई, राइट? हर आइज बिकम वेट। इज इट क्लियर? एंड शी हग्ड. Then she gave her lots of hot soap in a mirror. खाना खाया, understood? 2 दिन से कुछ पेट में नहीं गया था, भूख भी बहुत लगी थी. Chauncey combed her hair and smiled brightly. क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे पथारी में ही लेटी हुई थी, खाना खा के थोड़ी खड़ी हुई, हाथ पैर धोए हो गए, बराबर है ना? फिर उसके बाल बनाने बैठ गई, right? In the afternoon, the doctor came. After examining the patient, he told Shu, Chauncey will now has the will to live. Right? दवाई असर कर रही है, चमत्कार हो गया है, अभी चॉन्सी को जीने की तमन्ना जाग उठी है, उसको जिंदा रहना है, right? I am confident she will recover soon. Definitely she will recover. I'm confident about it. Now, I must go downstairs and see Behram. क्योंकि दूसरा पेशेंट भी मेरे को देख रहा है, बराबर है? मैं behram को देखने जा रहा हूं. He was suffering from pneumonia. देखो कैसी ट्रेजेडी, उसको निमोनिया हो गया था. I am afraid there is no hope for him, क्योंकि उसकी उम्र भी हुई थी और he was suffering from pneumonia since last many days. देखता हूं बचने की उम्मीद बहुत कम थी. The next morning, Shu came and sat on Chauncey's bed, right? Taking Chauncey's hand in her and said, I have something to tell you. डॉक्टर ये बात करके चले, दूसरा दिन हुआ. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझसे एक बात करनी है. मिस्टर बेहराम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. अभी अभी मैं नीचे गई थी, मालूम पड़ा जो हमारे पड़ोसी थे मिस्टर बेहराम, जिसने हमको हेल्प की थी 2 दिन पहले, वो निमोनिया की वजह से मर गए. मिस्टर बेहराम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. 2 दिन पहले ये पेंटिंग बनी थी, 2 दिन पहले उसको सीवियर निमोनिया का अटैक आया, मर गए. मतलब देखो, द फर्स्ट डे द janitor found him on his bed. Janitor means housekeeper, room keeper, waiter, servant, right? Janitor. Right? Janitor means house servant. The janitor found him in his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He was been out in that stormy night. नीचे से पता चला कि उसको बहुत निमोनिया, सीवियर निमोनिया हो गया था, क्योंकि परसों पूरी रात ऐसे फियर्स रेनफॉल विंड और रेनफॉल में वो पूरी रात बाहर थे. और जेनेटर ने बताया कि जब वो सुबह अंदर आए तो खूब ऐसे शिवर कर रहे थे और बुखार भी बहुत तेज हो गया था निमोनिया की वजह से, राइट? Then they found a ladder and a lantern light lying near his bed. Right?
बाहर जाके देखा तो एक सीढ़ी उधर क्रीपर के पास मिली, एक फानुस मिला, लैंटर्न मीन्स फानुस उधर मिला, और जो क्रीपर की जो स्टेम्स थी बिल्कुल वो स्टेम पे ही उसने एक लीफ बना दिया था, राइट, पेंटिंग कर दिया था ताकि वो लीफ हिले भी नहीं, उसको कोई वेदर इफेक्ट ही नहीं होने वाला था, राइट. Then they found a ladder and a lantern still lighted under lying near his bed. There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. ताजा ताजा कलर की इसेल और सब कुछ मिले. टुकमा लीफ पेंटिंग के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो सब कुछ मिली, राइट, near the ladder. John said, "Dear," said Shue, "look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't fall when there was rapid wind?" जॉन सी को सब कुछ पता चल गया. शू ने बताया, ध्यान से वो पत्ते को तू देख, वो हिलता भी नहीं है. इतनी तेज पवन में पत्ता हिलता भी नहीं है. अभी तो तू सोच ले वो असली है नकली है. Haven't you looked out of the window? Didn't you see that leaf was not moving even in the fierce gust of wind? इतनी तेज पवन में वो पत्ता हिलता भी नहीं था, right? When the wind blew, it was Behram's masterpiece. He painted it the night of the last leaf fell. बराबर? वो परसों yesterday night बेहराम उसके घर आया था. शिव ने उसको सब कुछ बताया था. बेहराम समझ गया था, और शिव को बताए बिना ये उसने पूरी रात जाग के जब वो लास्ट पत्ता गिर गया तो वही जगह पे उसने बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला, दूर से ओरिजिनल दिखने वाला एक पत्ता उधर पेंट कर दिया. बराबर है? और उसने अपना मास्टरपीस बना लिया, राइट. सो दिस इज हाउ वन लाइफ वाज सेव्ड, राइट. नाउ लेट मी टेक योर होमवर्क. Homework, all question answers from material. See, there are total 1, 2, 3 and 4 questions. Extra 4 printed questions plus extra questions. Right? So it is given over here. You can locate. Right? It is given over here, printed. So this question and this question is a part of your homework. See you in next lecture. Till then, goodbye.